Welcome back, students. In this video we are going to see a new problem using the strategy of dynamic programming. So in dynamic programming, this is we are not being greedy, as well as we are not using the divide and conquer strategy. We choose the best of both the strategies in dynamic programming. Okay, so the name of the problem is Floyd-Warshall's all-pair shortest path. If you remember, we have already seen Diજરા's algorithm, and the purpose of Diજરા's algorithm was to find out single source shortest path. Okay, so from a single source, if we have to reach to other nodes, what was the single shortest path for reaching from a single node to the various nodes? That we have seen how to do using greedy strategy and Diજરા's algorithm. But the purpose of Floyd-Warshall's algorithm is to find out all-pair shortest path. All-pair shortest path means to connect any two nodes of a graph. What is the shortest path? Okay, so all-pair shortest path algorithm, the purpose of this algorithm is to find out the shortest distance or the shortest path that is available between any two pair of nodes in a given weighted directed graph. Okay, so let's see how the Floyd-Warshall's algorithm works. Now this is a given weighted graph. You can see that the graphs are being weighted and they also carry directions. They have directions. So to find out all-pair shortest path, that means to find out the shortest path between any two pair of nodes in the given graph, the first step is to find out the adjacency matrix for the given diagram. Okay, how do we design adjacency matrix? See, if there are 4 nodes in the graph, then the adjacency matrix is a 4x4 matrix. So if the weighted graph has 5 nodes, then your adjacency matrix will be 5x5 dimension. Okay, so we have designed a 4x4 matrix. Let's see how to fill this adjacency matrix. Okay, now one thing that we have to remember is if all the weights are positive, in that case we can make the diagonal elements as 0 in all the matrices that we are going to design. Okay, but in case the weights are negative, then you have to make the diagonal diagonal entries as 0 only in the first adjacency matrix. Okay, in the remaining matrix you have to calculate the diagonal as well as other elements or entries, but in the first matrix only you can make the diagonal element 0. That was in case the weights are negative. I'll repeat, if the weights are positive, as it is shown in this graph, then you can make the diagonal element 0 everywhere in all the matrix. Okay, otherwise you'll have to make the diagonal entry 0 only in the first matrix, that is the adjacency matrix. The first matrix is called as the adjacency matrix. So I'll make the diagonal elements as 0 in all the matrices. How many matrices we are going to design apart from the adjacency matrix? We have to design 4 matrices. Why 4? Because there are 4 nodes. Okay, so if there are n number of nodes, then you have to design matrix n matrices, and we'll name the matrix as D0, D1, D2, D3, D4. This is how we are going to name them. Okay, so let's first design the adjacency matrix. Let's fill the entries. So this is an entry which shows the weight from 1 to 2. Okay, so let's see the graph. Is there a connection or is there a direct edge between 1 and 2? Yes. From 1 to 2 we have an edge whose weight is 8. So the entry will be 8 over here. What about this entry? 1 to 3. 1 to 3. Do we have an edge going from starting from 1 towards 3? No. हमारे पास 1 से लेकर के 3 तक कोई edge नहीं है. We have 3 to 1, but we do not have 1 to 3. In that case, we have to use infinity. Okay, so wherever there is no edge from a particular node to another node, then we use the entry of infinity in the adjacency matrix. Okay, coming to the next entry, which is from 1 to 4. Do we have an edge 1 to 4? Yes, we have, and the weight is 1. So we'll fill it like this. Coming to this entry, this is 2 to 1. Do we have an edge from 2 to 1? No. From 2 to 1, we do not have any edge. So again, this entry will be infinite. What about this entry? 2 to 3. So let's see, 2 to 3, we have an edge of 1. Then 2 to 4. 2 to 4 also, we do not have any edge. So we'll write infinite. Let's see, 3 to 1. 3 to 1, we have an edge with weight 4. 3 to 2, we do not have any edge.
Then 3 to 4, yes, 3 to 4 also we do not have any edge, so we'll write infinite. Then last row, 4 to 1, 4 to 1 also we do not have any edge, so we'll write infinite. 4 to 2 we have an edge with weight 2. Then 4 to 3 we have an edge with weight 9. Okay, so this is how you are going to design the adjacency matrix. This adjacency matrix needs to be designed carefully, because if this goes wrong, then all your matrices, the remaining matrices will also go wrong. So you have to correctly fill the entries in the adjacency matrix. Let's cross check whether we have used all the edges or not. How many edges do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 6 edges we have in the given graph. So let's see, have we made the 6 entries or not? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, we have made 6 entries in the graph. That means no edges missed by us. Okay, तो ये हमारा adjacency matrix बन गया है. Now let's see कि with the help of this adjacency matrix, how we are going to design the next matrix. So from D0 we are going to design or fill the entries of D1. So as we have already seen, the diagonal entries we have made it as 0. Now in this matrix we are going to copy, since this is the matrix D1, we are going to copy the first row and the first column as it is from the matrix D0. So let's copy these entries. See, first row, this is the first row and this is the first column. So we are going to copy it as it is. So 0, 8, infinite, 1, first row, and first column is 0. 0, 8, infinite, 1, and first column is 0, infinite, 4, infinite. Okay, so first row and first column we have as it is copied in the matrix D1. Why? Because this was matrix D1. So in the D1 matrix we will copy first row, first column. In D2 matrix we will copy second row, second column, and so on. Okay. Now what are the remaining entries? What are the remaining entries that are left? Okay. So let's see. Now this entry, this, and this. These are some of the entries that need to be calculated or computed. So let's see how to compute the remaining entries. Okay. So maximum entries we have already found. Now see, when you've copied the first row and the first column, now check the first row. This row. Is there an entry of infinite in first row? Yes, we have an entry of infinite in this row. So if we have an entry of infinite in a particular row, then what we have to do, we have to copy the entire column from the previous matrix over here. Okay, so infinite 109. This we are going to copy as it is from here. What I said, check the first row that you have already copied. You have copied the first row. Okay. Do you see any infinite here? Yes, we see infinite here. So what we are supposed to do, we are supposed to copy this entire column where there is infinite. No? We are going to copy the entire column as it is. Okay, so this we have done. Similarly, that we are going to do this with column also. Check the first column that we have already copied. Is there an entry of infinite? Yes, we have an entry of infinite. This means we are going to copy this row also. Infinite, 0, 1, infinite. So we copy this row also. Again, if we look bottom, we again have another infinite. So we are going to copy this row also as it is. Infinite 2, 9, 0. Okay. So most of the values we have already got from the first matrix using this strategy. Okay. So what are the values that are left now? Okay. So this one and this one. These two values are left. Now let's see how to calculate these two values. Okay. Now, since we are supposed to find these two values, now what we have to do is, see, this was the first row and the first column that we have copied from the previous matrix. Okay, so I make two arrows, one towards the row that we have copied and one towards the column that we have copied. Okay. Now, if we are supposed to calculate this entry, and see, if I go over to this row, then this is the value, and if I go left side, if I go upwards, I get the value 8, which belongs to the first row that I have copied, and if I go left, I get the value 4, which belongs to the first column that I have copied. ये दो values को consider करना है. Now check this entry in the previous matrix. ये वाला entry जो कि 3 2 वाली जो entry है, वो previous matrix में क्या है? Infinite. Okay? So आपको क्या करना है? ये जो दो values है, 4 and 8. 4 and 8 is, if I add 4 and 8, I get 12. Okay? So which value is the smallest? Infinite or 12? Okay? So out of the two values, whichever is small, you have to choose it here. Okay?
Okay, I'll choose 12 here. Okay, so 12 is the value that we are going to choose here. How we have written 12? See, already in the previous matrix we had the value of infinite. But if I add these two values, why these two values? Because if we, these are the rows that we have copied from the previous row, and these two values how we have chosen I have already explained. So 8 plus 4 is 12 and infinite. Out of these two values, which one is smaller? 12. So we'll write down 12 here. Okay, we'll do the same thing over here also. See, I'll make a row over here. So if I go upwards, then 1 is the value. If I go left, 4 is the value. So 1 plus 4 is 5. Okay. Now see the entry over previous matrix. In the previous matrix for the same position 3 4 same position में यहाँ पे कौन सी entry है? Infinite. So which value is small? Infinite or 4 plus 1 5. 5 is smaller, so we are going to write here 5. ठीक है? So this is how our second D1 matrix is ready. Okay? So with the help of D1, now we are going to design the matrix D2. Now since we are designing matrix D2, which row and which column we are going to copy? The second row and the second column from the previous matrix. D2 will be designed with the help of D1. Okay. So D2 का second row, second column, let's copy it. Infinite, 0, 1, infinite. So second row I've copied. Similarly, we'll copy the second column. 8, 0, 12, 2. 8, 0, 12, 2. Plus the diagonal entries will also be 0. Now these are the remaining elements, remaining positions that needs to be filled. Okay. So how we are going to do it? Let's see that. As I told you, well, which row you have copied? This row. Okay. Second row you have copied. Now check whether the second row has an infinite. Okay. So if I have infinite here, that means I am going to copy the entire column from the previous matrix over here. So the column was 0, infinite, 4, infinite. 0, infinite, 4, infinite. I will copy it completely from that. In the second row, okay, in the second row, I again have another infinite. That means here the fourth column here, that also we are going to copy as it is. 1, infinite, 5, 0. 1, infinite, 5, 0. Okay, तो second row में दो infinites थी, तो इसलिए हमने previous matrix से ये दो columns को copy किया. ये तो हमारा second row हो गया. Let's see second column. क्या second column में कोई infinite है? नहीं, second column में कोई infinite नहीं है, इसलिए और कुछ copy हम नहीं कर सकते previous matrix से. तो हम what are we left with? ये एंट्री एंड ये वाली एंट्री, ये दो एंट्रीज अभी हमें इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. लेट्स सी हाउ टू फाइंड आउट. ओके, आई विल मार्क जो हमने कॉपी किया है. ठीक है, दिस इज द सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हमने मार्क किया था. ठीक है, हमने कॉपी किया था प्रीवियस से सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम के लिए. यहाँ पे हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉपी किया था, यहाँ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कॉपी किया. हमें क्या फाइंड आउट करना है? दिस एंट्री एंड दिस एंट्री. तो कैसे करेंगे हम? एक एरो हम यहाँ पे बनाएंगे. देखिए, जो हमने रो कॉपी किया है, रोज और कॉलम्स कॉपी किए, उसकी तरफ आपको एरोज बनानी है. अगर मुझे ये एंट्री कैलकुलेट करनी है तो एक एरो मैं यहाँ पे सेकंड रो की तरफ बनाऊंगी और एक एरो सेकंड कॉलम की तरफ बनाऊंगी. ठीक है, एक एरो सेकंड रो की तरफ बनाऊंगी और एक सेकंड कॉलम. अगेन मुझे ये वाली एंट्री कैलकुलेट करनी है, तो 1 एरो टुवर्ड्स द रो एंड 1 एरो टुवर्ड्स द कॉलम. इस तरह से. ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें देखना है कि कौन सी वैल्यूज, दो वैल्यूज हमें मिलती है. देखिए, मुझे ये वाली एंट्री कैलकुलेट करनी है. अगर सी वेयर द ये जो एरोज है किसको पॉइंट कर रहे हैं? 8 को और 1 को. दोनों का एडिशन क्या है? 9. ऑलरेडी यहाँ पे इस पोजीशन में यानी 1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये वाले इसमें प्रीवियस मैट्रिक्स में एंट्री क्या थी? इनफाइनाइट. तो हम कंपेयर करेंगे, इज इनफाइनाइट स्मॉल कि 8 plus 1 is small? 8 plus 1 that is 9 is small. That means we get an entry of 9 over here. Okay, यही सेम चीज हम यहाँ पर भी करेंगे. ठीक है, सी द वेयर द एरोज आर पॉइंटिंग टू. एरोज किसको पॉइंट कर रहे हैं? यहाँ पे ये 1 को पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे ये 2 को पॉइंट कर रहा है. 1 plus 2 is 3. सेम पोजीशन में प्रीवियस मैट्रिक्स में कौन सी वैल्यू थी? 9. और 1 plus 2 क्या होता है? 3 होता है. तो विच इज स्मॉलर, 9 और 3? 3 स्मॉलर. सो वी विल राइट हियर 3. ठीक है, सो इस तरह से हमें एक अपडेटेड मैट्रिक्स मिला है. ओके, सेम यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे D3 के लिए. D3 में हम D2 से थर्ड रो और थर्ड कॉलम को कॉपी करेंगे. सो लेट्स कॉपी. तो थर्ड रो इज 4 12 0 5, 4 12 0 5 एंड थर्ड कॉलम इज 9 1 0 3, 9 1 0 3. इस तरह से हमने थर्ड रो थर्ड कॉलम कॉपी किया है. ओके, सो वी हैव कॉपी थर्ड रो थर्ड कॉलम. ओके, थर्ड रो में क्या
कोई इनफाइनाइट है? नहीं है, वी डू नॉट हैव इन्फिनिटी ओवर हियर। थर्ड कॉलम में भी कोई इन्फिनिटी नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ से और कुछ कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो बचे हुए सारे एंट्रीज जो है हमें कैलकुलेट करने हैं। तो ये सारे एंट्रीज हमें कैलकुलेट करने हैं। सो लेट्स कैलकुलेट, ठीक है। सो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं हम, ये वाली एंट्री, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया, 1 एरो टुवर्ड्स द कॉलम, 1 एरो टुवर्ड्स द रो, तो क्या वैल्यूज मिलती है? 9 और 12, ओके। तो 9 + 12 कितना होता है? 12 + 9 इज 21। तो प्रीवियस मैट्रिक्स में देखो इस पोजीशन में क्या है? 8। तो जो मिनिमम है वो डालना है, आइदर दिस और द सम ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी 8 है एंड 12 + 9 इज 21, सो 8 इज स्मॉल, सो विल राइट 8 ओवर हियर। कमिंग टू दिस एंट्री, ये वाली एंट्री देखते हैं। सो 1 रो टुवर्ड्स द कॉलम, कॉपीड कॉलम, एंड 1 रो टुवर्ड्स द कॉपीड रो। तो क्या वैल्यूज है? यहाँ पे 9 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है। 9 + 5 इज 14 एंड ऑलरेडी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वी ऑलरेडी हैव 1 ओवर हियर। दैट मीन्स यहाँ पे 1 इज स्मॉलर। 9 + 5 14 और 1 को कंपेयर करें तो 1 इज स्मॉलर, सो विल राइट हियर 1 ओनली, ओके। कमिंग टू दिस एंट्री, ये वाली एंट्री देखते हैं। अगेन विल मेक एन एरो। तो यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है और यहाँ पे हमें 4 मिल रहा है। 1 + 4 इज 5, okay, and what do we have already here? यहाँ पे infinite है, तो which one is smaller? 5 is smaller, so we'll write 5 over here, okay. Now coming to this entry, ये वाली एंट्री निकालते हैं। अगेन एक एरो इधर, एक एरो इधर, so we have 1 and 5. तो 1 + 5 is 6 और ऑलरेडी यहाँ क्या है? इनफाइनाइट, so which one is smaller? 6 is smaller. इनफाइनाइट और 6 में से 6 smaller है, so we'll use 6 over here. Now this entry, so we'll point arrows. तो यहाँ 4 मिलता है और यहाँ पे 3 मिलता है। 4 + 3 7. What do we have already? Infinite. So 4 + 3 7 is smaller. So we'll write 7 over here. Now the last entry will calculate. तो यहाँ पे हम पॉइंट कर लेते हैं। So we have 12 and 3. ठीक है, 12 + 3 is 15 और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? 3 है, तो 3 is smaller. So sorry, we have 2 over here. Okay, so 2 is smaller. So we'll write 2 only. Okay, so this is the way in which we have designed the third matrix as well. Now moving to the last matrix, we'll copy the, since the matrix is D4, we'll copy 4th row and 4th column. So 4th row is 7 2 3 0. Okay, so this is the 4th row. Okay, and what is the 4th column? 1 6 5 0. 1 6 5 0. Okay, so 4th row and 4th column we have already copied. अब remaining जो positions है ये हमें fill करनी है, ठीक है। These are the positions we have to fill. Now, do we have an infinite in the row? No. So nothing can be copied from here. Do we have any infinite in the column? No. तो कोई रो और कॉलम में कोई इनफाइनाइट नहीं है, इसमें और कुछ कॉपी नहीं हो सकता है प्रीवियस मैट्रिक्स से। अभी हमें कैलकुलेट करना होगा। सो लेट्स कैलकुलेट। सबसे पहले ये वाला एंट्री कैलकुलेट करते हैं, ओके। सो एक एरो बना लेते हैं हम टुवर्ड्स द कॉलम एंड टुवर्ड्स द रो। तो कौन से वैल्यूज मिलती है? 1 मिलता है और यहाँ 2 मिलता है। 1 + 2 का एडिशन क्या है? 3। ऑलरेडी देखते हैं यहाँ पे क्या है इस पोजीशन में। प्रीवियस मैट्रिक्स में वी हैव 8, सो 8 को अगर 3 से कंपेयर करें तो विच इज स्मॉलर? 3 इज स्मॉलर, सो वी विल यूज 3 ओवर हियर, ओके। नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस एंट्री। 1 एरो टुवर्ड्स हियर, 1 एरो टुवर्ड्स हियर, सो हियर वी हैव 1, हियर वी हैव 3, ओके। 1 + 3 is 4. व्हाट डू वी हैव ऑलरेडी ओवर हियर? वी हैव 9, सो 9 और 4 को कंपेयर करें तो वी हैव 4 विच इज स्मॉलर वैल्यू, सो वी विल चूज 4 ओवर हियर। Now calculating this value, 1 arrow towards here, 1 arrow towards here. So here we get 6, here we get 7. 6 + 7 is 13. What do we have already over here? We have 5. So 5 is smaller. So 5 is smaller than 13. We'll use 5 only. We will not change. Okay. What about this? Okay, 1 arrow over here, 1 arrow over here. So we have 6 and 3. 6 + 3 is 9. Let's see what we have already. We have 1 over here. 6 + 3 is 9. 9 और 1 को कंपेयर करें तो 1 is smaller. So we'll choose 1 only. ओके, दिस एंट्री। सो यहाँ पे 7 मिल रहा है और यहाँ 5 मिल रहा है। 7 + 5 is 12. What do we have already? We have already 4. 4 is smaller, so we'll choose 4 only. Okay, the last entry. So we have addition of 5 and 2 is 7, and but we already have 12 here. 12 and 7 में से 7 smaller है, so we'll choose 7. Okay, so ये जो मैट्रिक्स है, लास्ट वाला जो मैट्रिक्स है, ये हमारा फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ वाला, ऑल वेयर शॉर्टेस्ट पाथ वाला मैट्रिक्स है। क्योंकि आप अगर इसको देखो तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे किसी भी दो नोड्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। So what is the final matrix that we have got? 0 3 4 1 5 0 1 6 4 7 0 5
चूज कर लो, जैसे कि ये वाला एंट्री क्या है 1 और 2, 1 से लेके 2 जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, 1 से लेके नोड 1 से लेके नोड 2 में जाने का अकॉर्डिंग टू आवर एल्गोरिथम हमको शॉर्टेस्ट पाथ क्या मिला 3। तो चेक करते हैं, देखिए 1 से लेके 2 आप डायरेक्टली जाओगे तो आपको 8 मिलेगा, लेकिन क्या कोई और पाथ अवेलेबल है, येस वी हैव 1 एंड 2, 1 + 2 is 3, दैट मीन्स 3 इज द शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, ऐसे ही रैंडमली आप कोई भी क्रॉस चेक कर सकते हो। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन नोड 3 एंड नोड 4, 3 से 4 जाने के लिए हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या मिला है 5। लेट्स चेक 3 से 4 जाने के लिए, ठीक है, 3 से अगर 4 जाना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या मिला है 5। सो कैसे है 3 से 1, 1 से 4, 4 + 1 5, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 5। लेट्स चेक वन मोर, 4 से 1 वी हैव गॉट 7, ठीक है, 4 से 1 जाना है तो वी हैव गॉट द शॉर्टेस्ट पाथ है 7। सो लेट्स चेक 4 से 1 जाना है, ठीक है, तो कैसे जा सकता है 4 से 1, ओके। सो 4 से 1 जाने के बहुत पाथ है, हम ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन ये 9 + 4 हो जाता है, लेकिन हमको तो उससे भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल गया है, शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है। तो देखते हैं हाउ वी कैन गेट इट, 2 + 1, ठीक है, 2 + 1 is 3, 3 + 4 is 7, ठीक है, तो ऐसे हम जा सकते हैं, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। तो इसी तरह से यू कैन चेक कि सारे एंट्रीज जो है ये आपका फाइनल मैट्रिक्स है, विच इज गिविंग यू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड्स इन द गिवन ग्राफ।